Good evening, people. So my name is Smriti Shah, and we are here basically to discuss the nuances of sociology answer writing with the plain intention of maximizing our score in sociology, right? Is there anyone in the classroom who's writing mains this year? Okay. See, we are going to keep in mind every section of the student. One, who's writing mains this year. Second, who would be writing their mains next year. And third, who have yet not started their preparation as far as sociology is concerned. Okay? So we would be keeping things in mind. Even for those who are writing mains this year, this is going to be effective for you as well. Is that clear? Because mainly the focus is on you guys because you do not have much time left. Okay? See, as simple as that, as I believe in this saying, and that is why it is being there on our screen, that you have to learn the rules of the game, everyone, and then your target is to play that game better as compared to others. As simple as that. This examination, so far you would have realized it's not about securing 80%, 90% or topping. It doesn't work like this. You have to ensure you are better than the rest. And at the end of it, you would be sailing through and you would be finding your name in the list.
did you ever bother or did you get the time to just explore out of curiosity that what has been the overall marks which this year the selected students or those who unfortunately could not make it to the final list, what was the variation? Did you ever get time? Because nowadays so everything is available on YouTube. Every other person is talking about who is scoring what and how much is the difference in everything. In case you get time and think about it, you would realize again, and time and again it has been happening, again there have been 3 papers which made all the difference. And that was optional, ethics and essay paper. In essay, the variation has been 50 to 60 marks, to say the least. There have been students who have secured more than 140. There have been students who have been hovering around 85 to 90. Even in context of optional, this difference is all the more. There are students who are hovering around 230, 240. On the other hand, there are students who are securing 315, 320. Game is over. If 60, 70 marks variation in optional, 40 to 50 marks variation in your essay, you are already having the variation approximately which is reaching 120 to 130. Game is over. Either 100 number में तो list खत्म हो जा रही है. So either you are in the list or you are not in the list. 999 was the number which is required to be in top 100. और 940 के बाद list में नाम ही नहीं है. तो 50 नंबर में लिस्ट खत्म हो जा रही है. तो हमें समझने की जरूरत है that how much it is important to focus on your optional. And this session is purely about sociology. So we are going to discuss how we are supposed to proceed as far as sociology answer writing is concerned. Because to be very honest, this year 315 has been the highest. If I say that let's take one student has secured 315. Let us say there are some students who have secured more than 300. But largely, we are going to rate ourselves as per the average score. The average score has been 270 to 285. That is the number where most of the selected candidates are also hovering around. There have been students in the list who have managed to secure 270 to 280 as far as sociology is concerned. But our target should be 300 and 300 plus. But any given day, our bottom line should be 275. Nothing less than 275 is going to work in this examination. And the record is straight. You have to be in top 100. Are you serious about clearing this exam? Or we are just here to have fun? Are we serious? Everyone? Are you really motivated to clear this exam? So can I assume each one of the student who is sitting in this classroom and watching the session online, you have a dream to be in top 100? In your very attempt, right? Top 100 ke liye simple logic 1000 plus marks is required. Any given day, we cannot depend on personality test because it is highly subjective. Let's take the worst case scenario. We are hovering around 150 in personality test. So that means any given day, I have to secure 850 in my mains. And if I have to be in the list, it has to be 800 plus. So, क्योंकि जो भी आपका कट ऑफ होता है, like 758, 760, उससे 50-60 नंबर तो ऊपर होना पड़ेगा ना, to be in the final list. So, your target should be 850, and your bottom line should be 800. So, anything between 800 to 850. And if you have to secure that marks, the said rule is 275 is the minimum to score in optional. Anything less than 275 will make you dependent on the marks of personality test. It will make you dependent on how much more you are scoring in GS and essay paper. So hands down, 275 is going to be our bottom line. I'm not saying that is our target. That's my bottom line when it comes down to sociology. Nothing less than 275 we are going to settle for. Now the agenda for today's session is how to ensure that we secure that 275. Is this very clear for everyone? Now, there might be some students who have taken or prepared their sociology from some respective coaching. Absolutely fine. There would be some who have thought of preparing society on their own. In both the situation, this is the strategy that we are going to follow. Every paper has a template. Every paper has a set strategy. And the strategy has to be followed in a chronology.
So the first and foremost thing that you have to do, no matter whether you have taken the coaching, no matter whether you are preparing on your own, go and study your syllabus. I know you must be thinking, ma'am, do you really think we haven't done that? So that's the first thing that we do. No, you only glance through your syllabus. You never study your syllabus. We think that this is the syllabus which is kept there. एक किताब हम खरीदते हैं पतली सी, जिसमें syllabus होता है और topic wise previous year questions लिखे हुए होते हैं, वो सबने खरीद रखी है. But we never bother to actually analyze that what exactly is there in the syllabus. And sociology की एक खासियत है, very rarely they go outside the realm of the syllabus. And even if they are going, that is only constituting 10 to 20% of your paper. Why bother about those 10-20% when you can nail the 80% of the paper? So you're focused, and that's the same thing which we also talk about prelims. Everybody is worried about those 25-30 questions which are new. Ma'am, do we need to change the strategy? Absolutely not. Same holds true for optional. You don't have to worry about those 20% of questions which might be new, which might be altogether a new application of what you have studied in sociology. Your focus has to be those 80% of the paper which you can actually nail if you study your syllabus. And we will discuss how to study the syllabus. For example, I'll just take one topic to make you understand. What's the first topic? Modernity and social changes in Europe and the emergence of sociology. Basically, they are saying that what has been the elements of modernity, what has been the social changes in context of Europe, and how it has created grounds for emergence of sociology. That's how you start studying your syllabus. Okay? Once you've done that, immediately what you will do is the next level, that is go and read your previous year question with respect to that topic. आपके पास वो पतली booklets हैं जिसमें topic wise previous year are given. The moment you read the topic, immediately how that topic has to be prepared, from where will you get the guideline? From your previous year question. Once you see the previous year question, I realize this is my previous year question. Is it visible for everyone? How did intellectual forces led to emergence of sociology? How had enlightenment contributed to emergence of sociology? What aspects of enlightenment do you think paved way for emergence of sociology? Discuss the historical antecedents of the emergence of sociology. Europe was the first and only place where modernity emerged. घूम फिर के इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बने. So now I know the topic. I know the kind of questions UPSC has been asking. Now comes third job, that is based on my understanding of the syllabus as well as the kind of questions which have been asked, I will prepare my notes. Forces responsible for emergence of sociology. Intellectual forces, social forces, political forces and economic forces. I am assuming that we have read some sociology, right? So if I'm talking about the intellectual forces, you can talk about Renaissance, scientific revolution, or reasoning, rationality, objectivity. Under social forces, we are discussing situational and religious forces. Then political forces, talking about French Revolution, virtues of equality, freedom, liberty, democracy. And then economic forces is nothing but industrial revolution. Because of all these elements of modernity, it is known as European modernity. And European modernity is associated with rapid social change, which resulted into the demand or the urge to lead to the development of a new discipline which can help us to understand that how these problems can be resolved. Once we know the background, then we go in detail. What are those intellectual forces? When you are preparing the intellectual forces, you should name all the scholars which you are going to write in your answers. So whether it is René Descartes, whether it is David Hume, you have to mention the scholars. See, content can vary. You can have altogether a different source of content. Once we are done with intellectual forces, with respect to social forces, there are situational and
religious aspect of it. Then we have political forces in detail, that is nothing but French Revolution. Then we have our Industrial Revolution. Now see, because of modernity, there were emergence of certain social problems. Once we have studied those social problems, it resulted into crisis of modernity. And basically, to study this, a new discipline developed, which is nothing but sociology. Did you get the point? Now, if you get a question, आप इसी में से content extract करके वो question के answers कर सकते हैं? Whether it is intellectual forces, whether it is enlightened period, or it is historical antecedents, you can answer all the question. Can we make the diagrams like this in the answer? Yes, you can. I will discuss every component in detail. I am just telling you how to study the syllabus. Once you read the syllabus, immediately open the previous year questions. And this is true for both the set of students who have done their foundation in sociology or who are preparing on their own. You need to understand who is going to write the mains. You or your teacher? You. If you have taken a coaching, irrespective, GS, sociology, essay, whatsoever, you are studying from whose perspective? Teacher. But you have to write the exam from your perspective. Own your preparation. मैम टॉपर के नोट्स पढ़ने से हो जाएगा? वो टॉपर के नोट्स हैं, इसलिए वो टॉपर है. अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके नोट्स की जरूरत है. वी कैन गिव यू द आइडिया कि ऐसे नोट मेकिंग होती है. अब ये नोट मेकिंग आपको करनी है, और ट्रस्ट मी, जब आप ये नोट बनाएंगे आपका कंटेंट मुझसे अलग होगा. Which source have you read? What thinker you wanted to boil down? Which examples you have been prioritized? Which critique you want to write? What application you can think of would be very different from what I am thinking, but one thing would be same. The perspective on the topic, the context of the topic would remain the same for you also and for me also. Your reference group theory जो आप मर्टन की पढ़ रहे हैं, वो मेरी थ्योरी और जो मैं पढ़ रही हूं उससे अलग नहीं होगी. लेकिन रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी का एग्जाम्पल जो आप लिख रहे हैं वो आपका मुझसे डिफरेंट हो सकता है. लोग अक्सर बोलते हैं यार ये सोशियोलॉजी में ना एप्लीकेशन आ गया, ये कैसे करें? वो सबसे आसान होता है तभी जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. एंड देयर आर टू पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इन टू वेज. वन, if the application based question comes, you will be able to write the answer. और दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली सोशियोलॉजी पेपर 2, मैम जीएस टाइप क्वेश्चन था, इसको सोशियोलॉजिकल कैसे लिखना था? ये मेन डाउट है कि पेपर 2 में मार्क्स नहीं मिल रहे क्योंकि हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को कोट नहीं कर रहे हैं. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ऐसे ही हम अभी बात कर रहे हैं, कोई क्लासरूम तो है नहीं. डू वी नो वन ऑफ द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी इज परसिस्टेंस ऑफ डाउरी. ये है, ठीक है. राइट a short note on persistence of dowry in India from sociological perspective. Everyone knows persistence of dowry. Everyone has prepared this topic from GS. People did not prepare the topic for sociology. Sociology paper 2, the question is, write a short note on the following. The first question is persistence of dowry in Indian society from sociological perspective. अब मुझे उस वक्त स्ट्राइक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने स्पेसिफिक थिंकर्स डाउरी से रिलेटेड नहीं पढ़े हैं. ओके, आप में से कितनों ने, हु ऑल हैव स्टडीड मर्टन? एवरीवन मोर और लेस. मर्टन नाम सुना है? आर के मर्टन, एवरीवन, राइट? हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड लेटेंट एंड मैनिफेस्ट? हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड डिसफंक्शन? कैन आई अप्लाई दिस थ्योरी हियर? Persistence of dowry. There are some manifest function, there are some latent function. However, dowry needs to be challenged because it has certain dysfunctions. Has the answer been written from sociological perspective? Did you get my point? और वो तब possible है जब हमको latent और manifest का exact meaning पता है. Is it making sense for everyone? ठीक है? So you need to study your syllabus well. Am I clear on this? ठीक है. Now, this is just the syllabus which I ran. अच्छा, एक और चीज बताती हूँ. जैसे सपोज करो, सिलेबस पे ही आते हैं वापस. Let us say we have the topic sociological thinkers. अगर आप क्लियरली देखो,
quite evident what UPSC is expecting. That if you are studying Marx, you have to study these 4 topics. So whether it is historical materialism, mode of production, alienation, or class struggle, this is there in the syllabus, right? What you have to extract from it is that UPSC has a tendency to ask the question on compare and contrast. ये आप extract करोगे, और ये कहां से मिलेगा? Previous year questions. The second extraction is theory of alienation of Karl Marx holding any contemporary relevance. So whatever theories that you are preparing, it would be studied as per it is written in your syllabus. But there would be 2 things which would be added. One would be contemporary relevance of every theory, and second would be comparison and contrast. And where did you get the idea that these topics can be prepared from this domain as well? Your previous year questions. So this is what is known as studying your syllabus well. Are we clear on this? ठीक है? Next. Why PYQs? It helps us in many ways. First, it will help you understand demand of UPSC. That if this is the topic, then these are the kind of questions which UPSC is asking from this topic. That's one thing. Not only it helps you to understand the demand, it also helps you to streamline the preparation. Otherwise क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ. आप लोग सपोज करो जिसने नोट्स बना रखे हैं. There are many people who might have made the notes, या फिर कोचिंग करी होगी उसमें नोट्स मिले होंगे. वो नोट्स फाइनल नोट्स नहीं है. That is the first stage of note making. अब उस नोट मेकिंग में से you have to extract the content based on what kind of questions UPSC has been asking and what kind of answer writing is required. So PYQs helps you to streamline your preparation. Is this very clear? Many a time student ask me, ma'am, how would I know that I am prepared for sociology? PYQs. If you can't solve, and this is holding true for every subject for that matter, essay also, GS also, and sociology also. If you can't solve your PYQs, that means you are not prepared. As simple as that. Thumb rule. If you can't solve your PYQs, that means you are not prepared. And if you ask me that, is it that important? Yes. Because majority of the time questions are repeated. Majority of the time themes are repeated. उनका favorite topic है civil society. मेरे टाइम पे एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे सिविल सोसाइटी के 2010 में. सेम पेपर, 2 क्वेश्चंस ऑन सिविल सोसाइटी. दैट्स देयर फेवरेट टॉपिक. हाउसहोल्ड, दैट्स देयर फेवरेट टॉपिक. इरावती कार्वे किनशिप सिस्टम, दैट्स देयर फेवरेट टॉपिक. प्रेशर ग्रुप, हाउ इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, फेवरेट टॉपिक. स्ट्रैटिफिकेशन, कंपैरिजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव, देयर फेवरेट क्वेश्चन. So the point here is many a time 60 to 70 marks or 70% of the paper is repeated. So what is required is that you have to solve your PYQs. Now the question is kitne? 10 years. That's minimum. 2013 onwards, you have to solve the PYQs. And while solving the PYQs, you will realize that most of the time questions are repeated. So half of the time you don't have to even attempt because it is similar question. So handful of the questions have to be attempted, but it has to be attempted. दूसरी चीज, उस टाइम पे वो हमें थॉट प्रोसेस डेवलप कराता है कि इस क्वेश्चन का भी एप्लीकेशन इस तरह से पढ़ा जा सकता था, और फिर बेस्ड ऑन दैट आप अपने खुद से एप्लीकेशंस क्रिएट करने लग जाते हो. जैसे उन्होंने पूछा कि हाउ द थ्योरी ऑफ डिविएंस कैन बी अप्लाइड टू ट्रैफिक रूल्स, हाउ रेफरेंस ग्रुप कैन बी अप्लाइड टू फैशन इंडस्ट्री. दीज वर द क्वेश्चन. अब हम यूज करते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू करप्शन, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क फ्रॉम होम. आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करिए. इज दिस वेरी क्लियर? एंड ऑल ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट इन PYQs. So that's the second stage that you have to do. Once we are done with PYQs, let's just have a look what I was talking about. See the level of repeatedness every alternative year, 13, 15, 17 and 19. The question is, how do Karl Marx and Weber differ in terms of their analysis of social stratification? Differentiate between Marxian and Weberian theory of stratification. What is Weberian critique of Marxist notion of
stratification. Compare and contrast the contribution of Max and Weber on the theory of stratification. तो बेसिकली आप एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो. अब देखो दूसरा फायदा क्या होता है. अभी तक हम क्या प्रिपेयर करते थे? मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड वेबर की थ्योरी. क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट. तो अब आपको पता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट ओनली द सेपरेट थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. Is this making sense for everyone? We'll discuss in some time when I'll tell you answer writing, that how those comparative analysis have to be prepared. Similarly, that's their favorite topic. Critically examine the relevance of Durkheim's view on religion in contemporary society. Critically analyze Durkheim's view on elementary form or religious life and role of religion. In what way did Durkheim perceive religion as functional to society? इसको पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कि डर्काइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन पढ़ना है, ये समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि डर्काइम थ्योरी ऑफ रिलीजन को कैसे पढ़ना है. Durkheim is a functionalist. One of the application of his perspective is his theory of religion, which is nothing but studying the elementary form of religion. And then you will prepare the theory, you will prepare the critique of the theory, and then finally you will prepare the contemporary relevance of that theory. So this gives you the structure of your note making. You start with the perspective, you start with the application of that perspective, you discuss that application, you give the critique, and you talk about the contemporary relevance. This is how it has to be done. So previous year questions not only tell you that the questions are repeated, they also tell you how that topic has to be prepared, and I'll give you a better example to make you understand. The topic is religious revivalism and associated challenges. Now read the question. Give your comments on the growth of religious revivalism in present day context. Also discuss the consequences of religious revivalism in contemporary society. And in 2018, discuss the challenges thrown by religious revivalism to a secular nation state. क्या मैं इससे flowchart बना सकती हूँ? My topic is religious revivalism. What is religious revivalism from thinker's perspective? What are the factors responsible for emergence of religious revivalism from different scholars' perspective? What are the consequences of religious revivalism from different scholars' perspective? Finally, religious revivalism versus secularism from different scholars' perspective. Did you get the flowchart how to prepare religious revivalism? And from where did you get the idea? From your previous year. You don't have to depend on some third party to tell you कि कोई बना के दे दे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे flowchart आते हैं. Own your preparation. When you study like this, then you actually get the confidence that whatever I'm going to write, I am prepared for it. We are not lacking the content, we are just lacking the confidence. And confidence only comes when you own your preparation. Is this very clear for everyone? See? Similarly, I have prepared more. You can just, this PPT would be uploaded, you can go on the similar. Similarly, science and technology are major sources accelerating the process of social change. Examine science and technology as agent of social change. Critically analyze the role of science and technology in bringing about social change. The overall content remains the same in all the three questions. What changes is the structure. And how the structure changes? Because the tail words are changing here. Critically analyze, examine, I'll discuss in the class today. Once and for all, we will discuss the meaning of all the tail words so that we can use it both in optional as well as GS. Okay? Now, I don't know how many of you are going to take this work seriously, but I genuinely believe in note making, and I'll show it to you that how making your own notes can bring about a significant difference in your score in sociology. And we have to see, the purpose of this session is answer writing. You can't do your answer writing until and unless your notes are not prepared.
So you have to prepare your notes. I'll tell you what common doubts I get when I interact with the students or they drop me a mail. First thing, मैम thinkers लिखना बहुत ज़रूरी है क्या? मैंने कहा हाँ यार सोशियोलॉजी का पेपर है लिखेंगे तो मैम याद नहीं हो रहे हैं, करने तो पड़ेंगे. फिर आई वॉज जेन्युइनली थिंकिंग कि अच्छा ठीक है यार याद नहीं हो रहे हैं. फिर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि मैम अगर मार्क्स की थ्योरी है तो क्या मार्क्स की लैंग्वेज में लिखना है, मतलब एज इन पॉपुलराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, प्रोलेटराइजेशन, पोलराइजेशन, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्या ये सब लिखना जरूरी है या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? मैंने कहा थ्योरी किसकी है? मार्क्स की. लिखने की किसकी थ्योरी कही गई है? मार्क्स की. तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में क्यों लिखेंगे? तो फिर अगला क्वेश्चन है मैम ये सब याद कैसे होगा? ये सब याद ऐसे होगा. When you start making the notes, you start understanding, and that is why, see, there are a lot of toppers who believe in making those e-notes. ठीक है, that is their comfort. I am still that old school of thought, and it has worked for my students, and it will work for you as well. Please try to write handwritten notes. First, your handwriting improves. Second, your speed improves. Third, the spelling errors does not happen. And fourth, when you make handwritten notes, there is no possibility of cut, copy, paste. And when you don't do that cut, copy, paste, then whatever you are writing after comprehension, after understanding. नहीं तो क्या होता है, वहां से लाइन उठाई और चेप दी. Trust me, वो लाइन कभी याद नहीं होगी. लोग बोलते हैं ना मैम कुछ कोटेशंस बता दीजिए, कुछ डेफिनेशंस बता दीजिए. जनरली अरे कोट तुम्हें याद करनी है तो तुम खुद से जब पढ़ोगे तभी ना तुमको समझ आएगी कि कौन सी कोट याद होनी है. सो द पॉइंट हियर इज मेक योर ओन नोट्स. और उसका एक और तरीका बताती हूं. जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं बहुत बार क्या होता है, थक जाते हैं बनाते बनाते, तो फिर हम रिवाइज करते वक्त क्या करते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बनाने लगते हैं या एक सर्कल बना देते हैं और फिर उसमें से 2-4 तीर निकाल देते हैं. फिर एक ट्रायंगल बना देते हैं और उसके 3 पार्ट्स बता देते हैं. आपको रियलाइज हो रहा है आप शॉर्टकट नहीं मार रहे हो, आप डायग्राम्स बना रहे हो. और जिस डायग्राम के लिए मटेरियल हम इमेज रनर से खरीदने जाते हैं स्पेशली, कि सर कोई वो एथिक्स में डायग्राम बनाने की कोई किताब निकाली है किसी कोचिंग ने, या सोशियोलॉजी में क्या डायग्राम डाल सकते हैं, क्या उसकी कोई किताब है मार्केट में? मैम आप एक किताब क्यों नहीं निकाल देती हैं डायग्राम्स की? मैं तो तुम्हें तरीका बता रही हूं यार. आई एम टेलिंग यू, आई बिलीव इन अमृता सेन्स अप्रोच. रादर देन गिविंग यू द फिश, आई एम टेलिंग यू हाउ टू फिश. यू मेक योर ओन नोट्स. नोट्स बनाते बनाते डायग्राम बन जाते हैं, क्योंकि क्या होता है हर बार डिटेल नोट्स ना बनाए नहीं जा रहे होते. तो बनाते बनाते यू विल रियलाइज कि अच्छा इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं. एंड इन दैट प्रोसेस यू मेक अ डायग्राम एंड देन यू रियलाइज ओके दिस कैन बी यूज्ड इन द एग्जाम. I'll tell you one example, and that's a very juvenile example, but it happened abhi. I still have this habit. I started my preparation in 2009, and this is what, 2023. So some years of my aspirant life and more than 10 years of my teaching life. I still write and study. Even before coming for this session, I wrote and study, because then only I will get a clarity that what I want to convey to my students. So it so happened, there was Marx's theory of alienation. And I was thinking, मुझे वो दिखाना था कि मार्क्स की थ्योरी में फाइनली एलियनेशन कहाँ कहाँ से होता है, फ्रॉम योर प्रोडक्ट, प्रोसेस, फेलो बीइंग्स एंड सेल्फ. दिस इज हाउ आई डिड. And then I make a small box. This is the most juvenile thing that you can do. That person is suffering from fourfold alienation. Alienation from the product, process, fellow being and self. But the moment you add, an element of creativity is added in your answer writing. The monotony of your answer writing is now broken. It's the simplest way of doing something. Is it making sense for everyone? I'll show you more diagrams which is being done, and every diagram was by default. कोई भी diagram जानबूझ के नहीं बनाया गया था. ये थोड़े दिन पहले ही हुआ था. मैं जब I think I remember last year हो रहा था, I was coming and there was this question on symbolic interactionism which I wanted to discuss. So वो बैठे बैठे this happened. And it will help you in revising your notes. Simple. Everybody has heard about Mead ka symbolic interactionism. What is interactionism? It deals with interaction. What is interaction? Action between
individuals, how that interaction can be meaningful. If you are sharing some common shared symbols, will that be enough? No, you have to understand the meanings and motives. How that can be done? By the process of role taking. What is role taking? Imaginatively placing yourself in the position of others. Interactionism deals with interaction, action between individuals. It is meaningful when common symbols are shared. Along with that, interpreting the meaning and intention. That's the process of role taking. It is on the basis of that, when you are placing yourself imaginatively in the position of other, based on your interpretation, you plan the response. And based on the process of role taking, there is development of concept of self. Self is not inborn, two stages, play stage and game stage. It has two parts, me and I. पूरा symbolic interactionism आ गया यहाँ पे. अब मुद्दा बनता है कि अगर पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देखें तो इसी पे से क्वेश्चन बनते हैं. And more ahead, if you have to prepare, I need to prepare I and me. They might ask the question comparison and contrast. They might ask the question, what is the role of I component and me, or man in society and society in man? Did you get the point? Man in society and society in man. Man in society is I component and society in man is me component. I have to prepare this topic. I thought I'll prepare it like this. Whenever there are two comparisons which has to be done, I have said this enough times in my GS class as well. I am reiterating myself. I have to compare these two students. I can't randomly start comparing them, na? I thought I'll compare them on the basis of their age, on the basis of their height, on the basis of their education background, on the basis of their region from where they come, or religion, or caste. Did you get my point? Or on the basis of their hobby. Anything. But do you realize comparison is happening on the basis of something? So whenever the question is compare and contrast, parameters have to be there. It makes your job easier. And we will discuss more that how such parameters can be created. But is it making sense for everyone? That this is how the note making has to be done? One idea and advice, genuine sincere advice, whenever you are preparing, क्योंकि मैं अपनी गलतियां बताती हूँ. मैंने दो तरह से सोशियोलॉजी पढ़ी थी. एक जो पढ़ाई गई थी और दूसरी जो पढ़नी थी. दोनों बातों में बहुत फर्क है. एक जब पढ़ाई गई तो मैंने उतना ही पढ़ा जितना मुझे पढ़ाया गया. लेकिन जब मैंने खुद से पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ये बस एक पार्ट है. That's the beginning, not the end. So then I realized whenever you study any concept, immediately try to apply that concept. You should always have examples at your disposal. Trust me, the confidence that you will get, that will only come when you have the conceptual clarity and you know what are the examples of that concept and you have tried applying those concepts. Only then that sense of confidence comes. Is that very clear? So whatever is being taught to you, please change your perspective. GS और optional में बहुत फर्क होता है. And it is not specific to sociology. Every optional. It is not feasible for the teacher who's standing here to teach you everything about sociology. That just can't happen. Because it's a UPSC examination. आप अगर graduation, post graduation करते हो 3 या 5 साल लेकर आते हो. यहाँ पे आपको 3 महीने में sociology खत्म करनी है. आप टीचर पे सारा भार नहीं फोड़ सकते जैसे हम GS में करते हैं. इसने नहीं पढ़ाया, खुद भी कुछ कर लो. नहीं पढ़ाया तो खुद पढ़ लो. बुराई करने में लगे उसने नहीं पढ़ाया, अरे खुद पढ़ ले भाई. So the point here is कि sociology, no teacher, no matter how hard they try, they can't cover everything which is there in the syllabus. But definitely every teacher will try to ensure that your basics are clear. So that is the beginning of your preparation. After that, you need to learn to apply those basics. Is this making sense for everyone? ठीक है? Can I proceed? These are some of the notes which I have prepared, and these notes would be available on the Telegram channel Sociology by Smriti Shah. तो वहाँ पे मैंने शायद upload भी कर दिए होंगे. कुछ और बाकी है वो भी मैं upload कर दूंगी आज. So the point here is I'm just trying to tell you that how I incorporated the diagram. Everybody was aware about R.K. Merton? ठीक है. So then what happened was we were writing latent and manifest. I wanted to squeeze everything on this paper.
I didn't want to move to the next paper. So this is how I wrote the example. Example of latent and manifest. What is the manifest function of media? Entertainment. What is the latent function? Politically active citizenry or strengthening the democracy. What is the manifest function of school? Education. What is the latent function? Socialization. What is the manifest function of beauty pageants? Judgment of the beauty standards and everything. That is obvious function. What is the latent function? Enforcing patriarchy or notions of ideal womanhood. That is what it is getting. Are you getting my point? Can I use this diagram in answer writing? If there exists a question on latent and manifest function, can I just make this diagram? I gave 3 examples very quickly. What is one latent function and what is one manifest function? And the diagram has been there. Is it, okay, forget about anything. You are reading the answer. Will this give you the clarity that what the student is trying to say? The job is done. Is it making sense for everyone? See? Similarly, this is one very common diagram which people make with respect to the deviance theory, right? This is how you make the rejecting the means and rejecting or accepting the goals. Now what you need to do, whenever you are making this, learn to write the example there itself, so that you are not wasting your time and space. So whenever you learn to make these diagrams, whether you are talking about innovator, you are talking conformist, ritualist, or rebellion, whatever you are writing, write the examples in the box. Rather than writing what are they, क्योंकि वो तो आप अलग से कर ही रहे हो. In the diagram, give the example. A school student is one who accepts both means as well as the goals. A mafia is one who rejects the means but accepts the goal. The bureaucratic officer is one who accepts the means but reject the goal, and homeless person is rejecting both means and goal. Socio-religious reformers come up with new means and new goals. Did you get the point? Okay. Is the diagram making sense? This is the most common diagram most of the students make, but this is how you have to do the writing part. This will be learned only when you make the notes. And just tell me something, ये notes को revise करना मुश्किल होगा? नहीं. But ये notes आपके होने चाहिए. तभी आप comprehend भी कर पाओगे कि आपने क्या लिखा है. Is it making sense? जितना better comprehension होगा, उतना better retention होगा. Is it clear for everyone? Okay. I wanted to show you one more diagram, which, okay. यही मैं बता रही थी, शॉर्टकट मार रही थी मैं. तो वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में हो गया. मिडिल रेंज थ्योरी पे क्वेश्चन आए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? मिडिल रेंज थ्योरी इज ट्रिपल अलायंस ऑफ थ्योरी, मेथड्स एंड डेटा. You can start your answer with this. Did you get my point? See? Karl Marx. There are 4 topics: alienation, historical materialism, class struggle and mode of production. ये पहला है. फिर हर एक टॉपिक पे एक एक पेज का नोट. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कैसे पढ़ते? Why it is known as historical? Why is it known as materialism? What is the significance? What is the criticism? बात खत्म. कहां से पता चला ऐसे पढ़ना है? प्रीवियस ईयर से. Did you get the point? There are some notes which I will upload so that you can take inspiration, you can see how the note making has to be done, then create your own style of note making. I'm not saying this is the perfect. ये मेरे पल्ले पड़ रहा था इसलिए बना दिया. Is that clear? Can I make, अगर mode of production पे question आए तो ये diagram सबको पता है. Mode of production कोई बड़ी बात नहीं है. Can we say perfect equality, communist mode of production? We move to inequality, ancient and slave mode of production, intensified inequality, feudalistic mode of production, consolidated inequality, capitalist mode of production, equality, socialist mode of production, going back to perfect equality. आप mode of production सब पढ़ चुके हैं, different mode of productions पढ़ चुके हैं. Can I make this diagram if I get a question on mode of production? कुछ डायग्राम ऐसे होंगे, और सब छोड़ो, खुद से नहीं बन रहा. आप टॉपिक डालते हो गूगल पे, उसमें आता है ना इमेजेस, ले लो वहां से. तो मेहनत करो, नोट्स बनाओ, इमेजेस से उठा लो यार. खुद कुछ सोच लो, कहीं से उठा लो, बोरो कर लो. देयर आर सो मेनी बुक्स दैट यू माइट बी रेफरिंग टू. देयर आर सो मेनी नोट्स, कोचिंग नोट्स दैट यू आर रेफरिंग टू. किसी नोट्स में कोई ना कोई डायग्राम होगा. टेक द इंस्पिरेशन, ट्राई टू यूज इट इन अदर प्लेसेस. एंड वेयर यू कैन लर्न द इंस्पिरेशन. और सबसे अच्छा सोर्स बताती हूं जो किसी बुक में नहीं, कहीं नहीं, टॉपर स्क्रिप्ट्स.
you get the best ideas from topper script, whether it is essay writing, whether it is GS, whether it is sociology. एंड क्यों बेस्ट बोलती हूं? क्योंकि वहां आपको एक अश्योरेंस होता है कि दिस स्ट्रैटेजी हैज वर्कड फॉर देम, दिस स्ट्रैटेजी विल ऑल्सो वर्क फॉर मी. So many a times you get the idea from the topper's scripts. To be very honest, I make an honest confession. Many a times I get the idea for answer writing by going through the scripts of the students. And I will show it to you. That how students write such phenomenal question that you get the idea. Is this part of note making clear? Now comes the most important part of note making, that is sociology paper 2. ऐसे कैसे हो सकता है कि हम prepared ना हो? आपको पता है सोशियोलॉजी पेपर 2 में एक सेक्शन सी करके कुछ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. हम अक्सर आके क्या बोलते हैं, मैम पार्ट ए पार्ट बी तो तैयार है, पार्ट सी तैयार नहीं हुआ, कैसे करना है? हम हमेशा प्रॉब्लम लेके क्यों आते हैं? वाई आर्ट वी लुकिंग फॉर द सोल्यूशन? तैयार तो करना ही है. आपको एक सिंपल सा तरीका दिखाते हैं. जो सेक्शन सी का सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड हर टॉपिक पे 150 to 200 वर्ड्स का राइटअप होना चाहिए. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, मैं इजी कर देती हूं. आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, विच एवर करंट अफेयर्स, लेट अस से यू आर रेफरिंग टू विजन का मैगजीन, उसमें सोशल इश्यूज आते हैं. देर आर सोशल इश्यूज विच आर कॉमन, some social issues which are there also in your syllabus. Even if it is not in your syllabus, if it is in current affairs, there is a probability it can be asked in sociology paper as well. For example, we predicted the question on child labor. हमें पता था माइग्रेशन पे सवाल आएगा, हमें पता था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल आएगा. आपको पता होना चाहिए कि अगर वो करंट में चल रहा है, अगर मी टू हुआ है, तो मी टू पे सवाल आएगा. So how can you say you are not prepared for it? हमें पता है एजिंग इज अ प्रॉब्लम. वी आर लुकिंग टूवर्ड और फॉरवर्ड टूवर्ड्स लॉन्जिविटी डिविडेंड. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन एजिंग. अब जब एजिंग आपको पता है, प्रिपेयर योर टॉपिक. गूगल कर लो with respect to the problems of old age. What are the different sociological perspectives? गूगल कर लो, चार पर्सपेक्टिव तैयार कर लो कि अगर क्वेश्चन ओल्ड एज पे आया तो मैं ये 4 पर्सपेक्टिव लिख के आऊंगी. 500 नंबर हैं, सब कुछ छोड़ के इसकी तैयारी की जा सकती है. Are you understanding? It is worth your investment. It is make or break situation. I know people who have secured more than 300 and they are in the list with good rank and they don't have to be dependent on GS. क्योंकि GS में इतना तो प्री में पढ़ ही लिया और इतना तो हम मेंस की आंसर राइटिंग कर लेंगे that we can secure somewhere around 380, 390. By the way, GS का टारगेट 425 रख के चलेंगे. टारगेट 425 होगा, तब जाके कहीं 390, 95 पे जाके सेटल हो गए, तो टारगेट 425 रख के चलेंगे. ठीक है, बट एनीवे, आपने 4 थ्योरीज तैयार करी. हमें पता था कि न्यूज में चाइल्ड लेबर चल रहा है. प्रिपेयर योर नोट्स कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स व्हिच कैन बी रिटन. जब कुछ नहीं मिले, जब नहीं बिल्कुल एग्जाम में समझ आ रहा हो, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पता है क्या होता है? विच इज लुकिंग एट द फंक्शंस विच वुड बी परफॉर्म बाय दैट. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या होता है? क्या आंसर में ये 4 पर्सपेक्टिव लिख के आ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरी टॉपिक? क्योंकि टॉपिक आपको सोशियोलॉजिकली डिस्कस करना है. सो आइदर यू प्रिपेयर योर नोट्स वेल. सिंपल तरीका है, मेंस 365 उठा लो. मेंस 365 में जितने सोशल इश्यूज दिए हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी टॉपिक, ट्राई टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट. और डॉक्यूमेंट बहुत डिटेल में नहीं करना. जो नॉर्मल आंसर है वो तो मेंस 365 में दे रखा है. टू मेक दैट आंसर सोशियोलॉजिकल, यू नीड टू एड सम स्कॉलरली पर्सपेक्टिव. प्रिपेयर 3 to 4 स्कॉलरली पर्सपेक्टिव ऑन एवरी टॉपिक. दैट्स इट, यू आर डन विथ इट. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है, और भी तरीके बता दूंगी, बट यहां तक क्लियर हुआ? ये हमें पता था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी. अब एक सिंपल सी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना था फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. एज सिंपल एज दैट. ठीक. नाउ उसमें एक प्रोविजन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. इज एवरीवन अवेयर ऑफ इट? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? मतलब सिग्निफिकेंस एज एन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देंगे तो कैन आई से प्राइमरी लेवल पे इट वुड लीड टू बेटर सोशलाइजेशन.
Can I link it with perspective of Parson? मैंने जबरदस्ती लिंक करा है क्योंकि मुझे सोशियोलॉजिकली डिस्कस करना है, बट आपको मैं समझ आ रहा है मैं कैसे लिंक करने के लिए कह रही हूं. अच्छा, दूसरा उसमें एक प्रोविजन है दैट द ट्राइबल स्पेसिफिक एज इन द डिफरेंट कम्युनिटी स्पेसिफिक एजुकेशन वुड बी इम्पार्टेड. मतलब जो उनका यूनिक कल्चर है, आइडेंटिटी है, दैट वुड बी रिमेनिंग इंटैक्ट. कैन आई लिंक इट विथ द इशू ऑफ पीर बुर्दुएज रिप्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट कल्चर? पीर बुर्दुए पढ़ा है, सुना है, टॉक्स अबाउट ना कि रिप्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट कल्चर. वो ऐसा नहीं होगा इफ आई एम गोइंग टू टीच एवरीवन विद देयर ओन रिस्पेक्टिव कल्चर एंड आइडेंटिटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिमिलरली दिस इज टॉकिंग अबाउट, लेट अस जस्ट सेक, दिस इज टॉकिंग अबाउट लेट अस से 360 डिग्री असेसमेंट. आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 360 डिग्री असेसमेंट की बात है, ठीक है. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी. वो किसका कॉन्सेप्ट है? बोल्स एंड किनकिस का. आप देख रहे हो, वी आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द पर्सपेक्टिव एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू एग्जैक्टली नो द पर्सपेक्टिव एंड यू कैन अप्लाई दैट. सपोज करो ये सब कुछ नहीं याद आ रहा, वर्स्ट केस सिनेरियो आ चुका है, कुछ नहीं आ रहा. फिर अब हम ऐड करते हैं कि विथ बेटर एक्सेस टू एजुकेशन इट विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी. और ब्रैकेट में लिख दे सोरोकिन. Did you get the point what we are trying to say? Women would be given access to education क्योंकि जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रोविजन है जो आप पढ़ते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इट विल हेल्प अस रिड्यूसिंग द इंसिडेंसेस ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. इज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी अ सोशियोलॉजिकल भारी भरकम शब्द? यू आर एडिंग दिस. Can I say that because of specialized education, there would be more interdependence on each other, which will further strengthen organic solidarity in the society? और ब्रैकेट में लिख दें डरकाइम. आप समझ आया सोशियोलॉजी कैसे लिखते? कुछ भी था नया जो आपने पढ़ा? नहीं. आपने पार्सन भी पढ़ रखा है, डरकाइम भी पढ़ रखा है, सोरोकिन भी पढ़ रखा है, बस आपको उनको यहां पर यूज करना है. और कोई कह नहीं सकता ये गलत है क्योंकि आपने ये थोड़ी ना कहा है कि डरकाइम ने क्या कहा. आपने तो ये कहा है कि मुद्दा आप लाए ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में डरकाइम ने कहा है जो कोई नहीं झुटला सकता. डिड यू गेट माई पॉइंट? आपने ये नहीं कहा कि सोरोकिन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ कहा है. आपने कहा इसकी वजह से अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होगी, जिसपे किसने कहा है? सोरोकिन. डिड यू गेट माई पॉइंट? इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है. So this is how note making has to be done. Am I clear on this? Is everyone clear on this? Okay. Now, let us suppose there is a topic. You have your section C, and in your section C, there is a topic called agencies of change. When we talk about law as an agent of change, education as an agent of change, हम ये बात करते, ठीक है? आप law में योगेंद्र सिंह का perspective पढ़ते? This is how the application has to be done. टॉपिक आया जुडिशरी एज एन एजेंट ऑफ चेंज. अब हमको उस पे पर्सपेक्टिव्स याद नहीं आ रहे थे. जुडिशरी एज इन द केस लॉज दैट यू हैव टू टॉक अबाउट, बट लॉ एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज में आपने योगेंद्र सिंह का पर्सपेक्टिव पढ़ रखा है. योगेंद्र सिंह का पर्सपेक्टिव कहता है लॉ लेजिटिमाइजेज सोशल चेंज, लॉ इनिशिएट सोशल चेंज, लॉ fastens the pace of social change and law prevents negative social change. आपने 4 हेडिंग्स दे दी योगेंद्र सिंह के पर्सपेक्टिव से. अब इसमें एग्जाम्पल आप केस लॉस के दोगे which has resulted into change, which has initiated change, which has fastened the pace of change or which has prevented the negative social change. और ये केस लॉस कहां से मिलेंगे? GS पेपर 2 आप तैयार कर ही रहे हो. Is everybody preparing GS paper 2? You are aware about the case laws which are available. लेकिन क्योंकि मैंने ये broad 4 headings डाल दी और ऊपर में डाल दूंगी according to योगेंद्र सिंह, the answer has been made sociological. Is it making sense for everyone? Are the note making getting clear for everyone? ठीक है, पर ये करना पड़ेगा. फिर एक डिस्क्लेमर, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी बाय स्मृति शाह वाले चैनल पे अपलोडेड है. मैं अपलोड कर सकती हूं, पढ़ना आपको पड़ेगा. वो अपलोडेड है, जाके पढ़ो, ठीक है? और फिर वहां पे रुको नहीं, अब फिर खुद से बनाओ. अब देखो दूसरी चीज जो मैं बता रही हूं, सिंपल सा. हमें एक्सपेक्टेड था
कि हो सकता है क्वेश्चन सेक्स वर्कर पे बन जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना दैट सेक्स वर्कर ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन सेक्स वर्कर, राइट? प्रिपेयर इट बिफोर हैंड. गूगल पे जाओ, सेक्स वर्क पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स डाल दो, 3-4 तो खुलकर आएंगे. इफ नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन वेस्ट देयर माइट हैव बीन स्टडीज व्हिच हैव बीन डन विद रिस्पेक्ट टू सेक्स वर्कर्स. You just have to extract those 3 to 4 names and you have to write in your answer. और वो नहीं करना तो और आसान तरीका, आसान तो नहीं लगेगा आप लोग को, मेहनती लगेगा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना. न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आते हैं ना, उसके नीचे लिखा होता है सो एंड सो पर्सन, फिर वो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं या कोई एकेडमिक स्कॉलर होते हैं और उन्होंने वो पर्सपेक्टिव दे रखा होता है, वहीं पे नोट कर लो. जैसे एक दिन आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि विमेन इन एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स फ्लेक्सिबल लेबर, एंड दैट एंटायर आर्टिकल वाज रिटन बाय सुरेंद्र जोटका. तो वो एक आर्टिकल अपनी जगह, वो मेरा टॉपिक है विमेन इन एग्रीकल्चर, लेकिन अगर कोई और टॉपिक आएगा तो उसमें मैं लिखूंगी दैट विमेन कॉन्स्टिट्यूट्स फ्लेक्सिबल लेबर अकॉर्डिंग टू सुरेंद्र जोटका. डिड यू गेट माई पॉइंट? कहां से मिला ये? आपने जो आर्टिकल पढ़ा उसके नीचे नाम दे रखा है उस एकेडमिक पर्सन का हु हैज रिटन दैट आर्टिकल. मेक अ नोटिंग ऑफ इट. दिस इज हाउ द कंटेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड. सिमिलरली अगेन दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आ जाए सोशियोलॉजी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ नहीं मिल रहा, मैनिफेस्ट लेटेंट एंड डिसफंक्शन. कुछ नहीं मिल रहा, डर्काइम्स पर्सपेक्टिव डाल दो, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव डाल दो, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डाल दो, योर आंसर राइटिंग इज डन. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? कैन वी प्रोसीड नाउ? ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फाइनली लेट्स स्टार्ट विद आंसर राइटिंग. There are 2 aspects of answer writing. One is the content and other is the context. For me, context is extremely important because content varies. Content totally depends upon you. What is your source? From where have you studied? How much you are able to recall in the examination? Content can totally vary. What cannot vary is the context. Your context is determined first and foremost on the basis of the keyword. What I mean by the keyword are the tail words. There are many people who think that tail words can be avoided. जैसे अगर लिखा है assess, to what extent, explain, define, so जो हमें लिखना है उस टॉपिक पे हम लिखकर आ जाते हैं, it would be done. ऐसे नहीं होता. लोग कहते हैं एनालाइज दिया हो, डिस्कस दिया हो, कमेंट दिया हो, इलैबोरेट दिया हो, सब में क्या करेंगे? फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन एंड कंक्लूड. अगर मार्क्स की थ्योरी पूछ ली, थ्योरी बता देंगे, क्रिटिक बता देंगे, कंक्लूड कर देंगे. ये सिंपल लॉजिक सब लगाते हैं. Sometimes it works also, many a times it doesn't. So let's take the keywords one by one. First keyword define. ये अक्सर सोशियोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है. You will never get the keyword define on topics where there is no controversial perspective available. Define तभी आता है when that topic can be defined from different perspectives. Otherwise, define would not be asked. For example, define civil society. Do we know that there is no one standard definition of civil society? Every scholar, every academic person who has studied civil society has altogether a different perspective with respect to civil society. In fact, some view civil society from the functionalist point of view. Some will see it on the other realm. For example, one person, one school of thought says that civil society is a bulwark of democracy. But on the other hand, Neera Chandok says there exists a concept called counter civil society, which instead of strengthening democracy is actually targeting or threatening democracy. Did you get my point? यहाँ पे define civil society आता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? Start with a standard definition. Then talk about what are the challenges with respect to that definition. Then discuss what are the different perspectives with respect to that concept. And finally, conclude the answer. That is what do you mean by define. For example, define social stratification. Define patriarchy. Define household. There are different perspectives when it comes down to household, right? You write one definition which you know. Then you talk about how this is not a universal
or universally applicable definition. There are other perspectives also existing with respect to household, with respect to civil society, with respect to patriarchy. Then write those 2-3 perspectives. That is how the question on define is answered. Is it making sense for everyone? Even at the back, did you understand what is define all about? Is it clear? See? Next, discuss. Easiest tail word. और जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये जीएस में भी लागू होता है, तो जीएस के लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है. द सेकेंड टेल वर्ड इज डिस्कस. डिस्कस हैज अ सिंपल मीनिंग. इट्स अ रिटन डिबेट. Whatever topic has to be discussed, it's a written debate. This is my issue. Discuss Marxian theory of stratification. It's a debate. What is stratification? What is Marx's perspective on stratification? To what extent this perspective has been critiqued? And then finally you have to write the conclusion. So discuss is more about a written debate. हो सकता है for and against ना हो, वो टॉपिक ऐसा हो जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट नहीं जा सकते, तब डिस्कस का मतलब हो जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इज दैट वेरी क्लियर? सपोज करो उस चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तब डिस्कस का मतलब होता है एग्जामिन करो उस टॉपिक को डिटेल में. व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द consequences, if there are any lacunas, then what needs to be done. Did you get my point? Is it very clear? But a thumb rule, in discussion you have to conclude. That's mandatory. और conclusion मतलब random conclusion नहीं. You have to conclude based on what you have discussed in the answer. So whatever you have discussed in your answer, based on that the conclusion has to be made. That is nothing but discuss. Is it making sense for everyone? Till here everything is clear? Next comes, let's first take elaborate. Elaborate का simple thumb rule है, you don't have to give a counter argument. Elaborate मतलब the given statement is considered to be true. You just further go in detail by giving more justification, explanation, examples, but you don't give the counter argument. Elaborate का मतलब होता है उसी statement को you need to elaborate. Is it making sense? Tail words does make a difference to decide what should be the structure of your answer. Am I clear on this? Next, explain. ये बहुत common पूछ लेते हैं sociology में. Explain. Explain का मतलब होता है explain everything in nitty gritty. I'll give you an example also to discuss. Let's take the example. Just read the question. Explain Karl Marx's conception of transition from class in itself to class for itself. सिंपल सा टॉपिक है यार, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझे एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन का मतलब होता है ट्रीट दैट द अदर पर्सन डजंट नो एनीथिंग एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. सो आई विल टेल दिस पर्सन, डू यू नो व्हाट इज क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स? So first thing I will explain what is class. According to Marx, class is defined as the dominant social group in every stages of human history. Can I say this? Then I'll tell him that, do you know, there are two aspects of this concept of class. One is the objective criteria, other is the subjective criteria. Objective criteria is known as class in itself and subjective criteria is known as class for itself. Then I has assumed that he doesn't know anything. Then I will tell him that, do you know that, अब ये do you know नहीं लिखना आंसर में, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि class in itself का मतलब होता है is a social group which consists of everyone who have similar relations with the forces of production. Whereas class for itself is basically one who have developed their consciousness. There is development of true consciousness, simply subjective understanding of objective reality. When you actually have understood the level of discrimination or exploitation that you are experiencing, then it is known as class for itself. अब टॉपिक क्या एक्सप्लेन करना था? ट्रांजिशन. तो अब मैं बताऊंगी कि ये जो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ होता है ना, ये अक्सर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इट हैपेंस बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन. One is usurping of profit by the elite section, and second contradiction is social production and individual ownership. And this process of transition further get fastened because of development of certain condition: homogenization, pauperization,
proletarization, which leads to polarization. And when there is subjective understanding of objective reality, class in itself transforms to class for itself, which would be followed by proletarian revolution. Did I explain everything? Did you get the point? Question क्या था? Explain the transition. मैंने transition explain कर दिया. Answer यहीं खत्म. आपको जबरदस्ती critique of theory नहीं डालनी है. Did you get the point? अगर होता कि critically analyze the transition या डिस्कस दिस ट्रांजिशन या कमेंट ऑन दिस, तब आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते. आपको तो सिर्फ एक्सप्लेन करना था ट्रांजिशन, जो मार्क्स की थ्योरी है. अब वो ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आपको क्या लेना देना. इस क्वेश्चन में द टेल वर्ड इज एक्सप्लेन. तो चाहे वो वेस्टरगार्ड का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो डेथ ऑफ क्लास हो, पकल्स्की एंड वाटर, आपको वो सब नहीं लिखना. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इज इट मेकिंग सेंस? इज द मीनिंग ऑफ द टेल वर्ड क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना. नेक्स्ट. यार एक चीज में ना मुझे हमेशा डाउट रहता है, ये यूपीएससी इलस्ट्रेट क्यों देती है? क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन इज थ्रू डायग्राम्स एंड वी कैन मेक डायग्राम्स इन एवरी क्वेश्चन. So all I'm just trying to say is, when you get illustrate and there is a possibility of making the diagram, then do make the diagram. और जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वो तो डेफिनेटली वी विल इलस्ट्रेट थ्रू एग्जाम्पल्स ओनली. एग्जाम्पल्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, डेटा हो गया. तो सिंपली व्हाट इज इलस्ट्रेशन? एक्सप्लेन द टॉपिक बट अलोंग विद दैट एक्सप्लेनेशन गिव योर एग्जाम्पल्स. If there is a possibility of making a diagram, go ahead with it. But normally sociology में मुश्किल हो जाता है diagram मिलना हर question में. You illustrate it with examples, statistics, data, whatever is convenient for you. Is it making sense for everyone? ठीक? Next. First we will discuss assess. मैं analyze और examine last में उठाऊंगी. There are three things that is commonly asked in sociology paper. One is assess. Second is to what extent. And third is how far. Answer remains the same. I'll give you an example. Assess the impact of modernity on religious fundamentalism. Did you understand? To what extent modernity is leading to religious fundamentalism? How far modernity is responsible for religious fundamentalism? तीनों में आंसर सेम रहेगा. तो अब आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ये होना चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. मतलब व्हाट इज मॉडर्निटी? व्हाट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म? Modernity has led to religious fundamentalism. However, there are other factors also responsible for religious fundamentalism. Did you get the point? But finally, in conclusion, you have to tell the examiner that you agree or disagree with the proposition. Question आया ना, to what extent modernity has resulted into religious fundamentalism. यहां ये conclusion जरूरी है that modernity creates the ground for emergence of fundamentalism, but it does not guarantee that religious fundamentalism will emerge. Did you get the point? So I am showing my agreement with the proposition that yes, modernity is responsible for religious fundamentalism, but that's not the only factor. Or you can write it is a necessary condition but may not be the sufficient condition. वो maths में नहीं पढ़ते थे if and only if, necessary and sufficient, वो थ्योरम के प्रूफ करते थे, तो आप वैसे यहां पर डाल सकते हो. बट द कंक्लूडिंग, देखो लिखा भी हुआ है, यू हैव टू क्लियरली स्टेट हाउ फार यू आर इन अग्रीमेंट विद द ओरिजिनल प्रोपोजिशन. डू यू अग्री दैट मॉडर्निटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और नॉट? इज दिस वेरी क्लियर? ये कंक्लूजन देना जरूरी होता है और तीनों का आंसर सेम रहता है. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक, कोई ऐसी चीज है? हाँ हाँ हाँ, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. नहीं, बिल्कुल दे सकते हो. हाँ, क्योंकि इट इज आस्किंग ना टू व्हाट एक्सटेंट, तो इट इज योर अंडरस्टैंडिंग वेदर यू अग्री विद द प्रोपोजिशन और नॉट. सो यस, यू कैन गिव योर एग्जांपल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. यस, यू कैन गिव दैट. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अक्सर क्वेश्चन आता है कंपेयर, कंट्रास्ट और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इन द सेम क्वेश्चन. वन बेसिक थंब रूल, अगर कंपेयर है तो आप सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर लिखोगे.
अगर कॉन्ट्रास्ट है तो पहले हम डिफरेंसेस बताएंगे जो कि 60 to 70% ऑफ योर आंसर होगा, एंड वेरी ब्रीफली यू विल डिस्कस दैट ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज एज वेल. So in contrast, more focus is on the dissimilarity and very less focus on the similarity. But compare में equal emphasis has to be given on differences also and on the similarity also. Is this very clear? और अगर compare and contrast आ गया, that's a win-win situation. You have to write both differences and similarity. Is it making sense for everyone? ठीक? I'll come to examine बाद में. बस एक comment देख लेते हैं. Comment is about your opinion. Opinion has to be reflected in the introduction itself. In simple words, if I have to say, comment and discuss is overturned answer. Discuss में पहले आप पूरी debate लिखते हो, पूरा justification देते हो, based on that आप एक conclusion देते हो कि this is my point of view. Comment में आप point of view से start करते हो और फिर बाकी answer में उस point of view को justify करते हो. So comment is your opinion, but opinion need not be extreme. You can have a balanced opinion. Is it making sense for everyone? Okay? Can we proceed further? Next. We need to understand there are two aspects. One is critically analyze and second is critically examine. Or it can be analyze and examine. ये दो words हैं जहां थोड़ी सी problem आती है. First and foremost important disclaimer. Critically does not mean criticize. Did you get the point? अब क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, क्रिटिकली एनालाइज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को. द पॉइंट हियर इज क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस. उस इन डेप्थ एनालिसिस में यू कैन गिव द काउंटर आर्ग्यूमेंट, बट दैट डज नॉट मीन दैट हार्ड एंड फास्ट रूल यू हैव टू क्रिटिसाइज. अगर उस आंसर में क्रिटिसिज्म है तो करो, काउंटर आर्ग्यूमेंट दो. But criticize as in critically does not mean to criticize. It means in depth. Now there are two aspects, analyze and examine. कैसे करें? एक simple thumb rule बता देती हूँ. I think it will work. Critically analyze this statement in context of Indian society. There are two words here. जब भी term होता है analyze, it means you define what is feminization of agriculture. You define what do you mean by women empowerment. You tell their interrelationship. How feminization has led to women empowerment, how feminization has not led to women empowerment. Hence, what needs to be done. So, analyze matlab every important term has to be defined and their interrelationship has to be explored. Critically analyze role of science and technology in social change. What do you mean? Theoretical perspective on science and technology. Theoretical perspective on social change. How science and technology is leading to social change. Different theories of technology as a means of change. And how technology not leading to social change, but in fact promoting status quoism or reproduction of dominant culture. And give 2-3 perspective and conclude the answer. Did you get the point? Is it clear for everyone? Is it making sense? Can I further proceed? Next is critically examine. Examine जब भी करते हैं, it has to be done from the perspective of some dimension. सबसे आसान तरीका होता है. You have to critically examine the, let us say, the relation, or you have to critically examine conflict
and functionalist perspective on stratification? Is this simple question? Critically examine conflict and functionalist perspective on stratification. When you get such question and you have to examine, first I will see what is the definition of stratification. So I start with the defined part. Second, I will be talking about what is the basis of stratification. Third, I would be discussing what is the structure of stratification. I can also discuss the consequences of stratification. I'll discuss it whether it is inevitable or with respect to desirability of stratification. जब भी एग्जामिन करते हैं, identify the broad important dimensions or issues that you will discuss with respect to that topic. So when the question comes on stratification, चाहे compare contrast ना भी आए, एक ही theory of stratification आ जाए, can this be the basis of examination? What is the definition? What is the basis? What is the structure? What is the consequences? Whether it is desirable or inevitable or not. Is that very clear? Critically examine आ सकता है ना, the relationship of sociology and economics. Critically examine the relation of sociology with other social sciences. So can I say the first would be the defined component, what is sociology and what is economics. The second aspect can be the subject matter. Next can be the scope. After that it can be the methodology, then it can be the reciprocal influence. How sociology influencing economics and how economics influencing sociology. Do we have the broad dimensions to examine the relationship of sociology with other social sciences? Did you get my point? What I'm trying to say? तो examination में broad dimensions का होना जरूरी होता है. Is this clear for everyone? Can we proceed now? Is there any tail word that you have not understood? See, the purpose would be defeated if we are not understanding. यहाँ तक सब clear है? Can I proceed? So the first aspect of the context was the tail word, the key word. The second aspect is theory and application. That's a very common set which UPSC asks. That is theory, application or theory plus application. Let me tell you a cheat code here. ठीक है? हर जगह नहीं apply करना, it's a cheat code. What if we don't know the application? What if the application that you are thinking is not the right one? At least write the theory, you will be given some marks. So if the question is on application, you still have to write the theory. For example, AGIL model with respect to tribal societies. That's the application. आपको strike ही नहीं कर रहा है कि AGIL framework को tribal societies में कैसे लगाएं. At least AGIL model ही define कर दो. Did you get my point? So that is theory plus application, one thing. Second thing is, even you know the application, still write the theory. Because if you write the theory, the examiner is easily able to understand the application part of the theory. So it is very important for us that you write the theory and then you define the application. Let me just see if I have an example, I'll show it to you. Oh yes, I have the example. See. The AGIL framework of functional prerequisites was established by Talcott Parson in his theory of action system. This is the model: adaptation, goal attainment, integration and latency. This is. Now you have to apply it to the tribal society. The person added a linking paragraph that tribal societies are the primitive societies in their social organization, institution and practices. While not as complex, a distinct AGIL framework is observable there too. Because you want to show the application. So a linking statement is given. अब उस बंदे ने क्या किया? This is basically a student script which I'm showing it to you. I told you, you learn from the students as well. So what he did was, first he made functional AGIL for tribal societies and then he made the dysfunctional AGIL model for the tribal societies. अब functional में क्या था? आप सबको Parson पता है ना? AGIL model पता है ना? ठीक है?
So can I say with respect to adaptation, it is hunting, economic aspect है, तो hunting, gathering, trifid, minor forest produce, this is nothing but the adaptation part. For goal attainment, you have headsman, you have Gram Sabha, council of elders. With respect to integration, animism, naturalism, or egalitarian basis of society. With respect to latent, it is family, tribe, or rituals. But then there is a dysfunctional aspect also, जिसकी वजह से alienation, insurgency and seclusion आ रहा है. और जहां economy में कमी है, जैसे कि झूम cultivation, exploitation, poverty, debt trap, that can be development induced displacement, that can be written in the goal attainment aspect, misgovernance. You can talk about alienation. We can talk about, let us say, stress, low motivation, breakdown of the solidarity in the society, which is negatively impacting the latent aspect. So you have the functional model and you have the dysfunctional model. Did you understand the application part? This becomes easy if you have written the theory. हो सकता है आपने जब एप्लीकेशन किया, एग्जामिनर इज नॉट कन्विंस्ड विद द एप्लीकेशन, बट सिंस यू हैव रिटन द थ्योरी यू विल बी गिवन सम मार्क्स. सो व्हेन द क्वेश्चन इज थ्योरी प्लस एप्लीकेशन, अगर सेपरेटली थ्योरी पूछी है तो डिटेल में लिख दो, लेकिन अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और थ्योरी नहीं पूछी है, इवन देन यू राइट समथिंग अबाउट द थ्योरी. एप्लीकेशन बिकम्स मोर रेलिवेंट. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? कैन वी प्रोसीड फर्दर? ठीक है. This was last year's rank 13. Her way of writing the answer was very different, but yet she has scored very nice marks. That's because the presentation was accurate. But did you understand theory plus application? ठीक है. दूसरा important dimension है which we need to understand. Let's just move from here. Before I come back to this point, the next important aspect of context is subparts. Make sure, no matter how much you know the answer, if you have not answered every subpart, you will not fetch marks. So try to restrain yourself from going overboard. Small little nitty-gritties have to be understood. For example, in Sociology paper 1, for 20 marker, you have how many pages? 4. In Sociology paper 2, how many pages? 3. So there is a difference in the number of page which is available. Okay, I think many didn't know that. So the point here is, when you write Sociology paper 1, 20 marker, you have 4 sides. But when you attempt the same thing in Sociology paper 2, you get 3 sides. That's the benefit of attempting the test series. Because from there you learn these nitty-gritties of what happens in UPSC. Is this very clear for everyone? Okay. But make sure every subpart has to be answered. And last thing that you have to keep in mind is, you are answering the essence of the topic. मैं आपको बताती हूँ गड़बड़ कहाँ होती है. कभी कभी यार कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे कि इकोनॉमिक्स मस्ट बी मेड द हैंडमेड ऑफ सोशियोलॉजी और इट मस्ट बी द हैंडमेड ऑफ सोशियोलॉजी. अब क्या हुआ, हमने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ रखी है, हम वही आंसर लिख कर आ गए. Did you get the point? Whenever you get the statement based question, you have to understand what's the demand of the statement, and accordingly you have to answer the question. Is it making sense for everyone? Now let's come to the most important aspect, that is the content. अब content को हम कैसे करेंगे? There are 2 parts to it. One is the substance, other is the style. दोनों हमको चाहिए. पहली चीज, सब्सटेंस में देयर आर 3 थिंग्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड. यू शुड हैव एन आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर, यू शुड हैव द सब्सटेंसिएशन ऑफ द आंसर, एंड थर्ड थिंग इज द लैंग्वेज. नाउ ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, बट हम कहां गलती करते हैं. यू गेट अ क्वेश्चन एंड यू लेट अस से फंक्शनैलिटी ऑफ द फैमिली. अब उसमें हमने बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार कर रखा है, दैट फंक्शनैलिटी ऑफ द फैमिली इज नॉट बीइंग अग्रीड अपॉन बाय ऑल. सो बेसिकली आपको फंक्शनैलिटी ऑफ द फैमिली को क्रिटिक करना है. सिंपल क्वेश्चन, एंड यू हैव लिस्ट ऑफ थिंकर्स. हम कैसे करते हैं? एक एक करके सारे थिंकर को कोट करना शुरू कर देते हैं. यही कर रहे हैं. आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन? नो. You are just quoting the thinkers that you know, but that's not the demand of the question. You need to understand. We quote thinker because we want to give credibility to my argument. और जरूरी थोड़ी ना है कि substantiation के लिए आपको हर बार thinker को ही quote करना है.
आप कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई रिपोर्ट, कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल कुछ भी कोट कर सकते हो यार. नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू हैव टू कोट अ थिंकर टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर हैज टू बी एन आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर. If your answer does not have an argument, you will not fetch marks. Is it making sense for everyone? Third and most important thing, which I have already told also, language. Can we write answers in our own language? Yes, mostly you do that. अपनी तो language में लिख रहे हैं. But the language has to be sociological. Please make use of sociological terminologies, more and more terminologies in your answer. And from where do we get those terminology? एक Oxford Dictionary of Sociology होती है, जाके खरीदो उसको. There are so many terms that you are, and the thinker's perspective that you are preparing, every thinker gives you so many terminologies. Make it a point that you are using those terminologies in your answer. Is it clear? Cultural lag को use करो, चाहे question Ogburn पे नहीं हो. Defunctionalization of family concept use करो, भले ही question Ogburn पे नहीं हो, but this is how answer writing has to be done. Make use of Sanskritization, make use of feminization, make use of organic solidarity, make use of alienation, make use of Verstehen, make use of ideal type. But do that. Is that very clear? So your answer has to be sociological, which can be either through your argument or thinker's substantiation or using sociological terminologies. Choice is yours. Is this very clear for everyone? The next part is the style, that is structure and presentation. Let me very quickly tell you this. I'll come back to this portion later. This is how the structure of any answer looks like. Introduction, body and conclusion. Again you will say, ma'am ये तो obvious सी चीज़ है, ये तो पता है हमको नहीं पता, क्योंकि most of our answers में हम conclusion देते ही नहीं हैं, क्योंकि जगह खत्म हो जाती है. इसलिए हम अक्सर पूछते हैं क्या 10 मार्कर में conclusion देना जरूरी है? हाँ भाई, आंसर कंप्लीट तो करोगे ही ना. So there has to be introduction, body and conclusion. तो फिर एग्जाम में याद कैसे आएगा? How will I write a good introduction and a good conclusion? We will prepare beforehand. I already told you, you have to go through your syllabus. You have to go through your previous year questions. You exactly know the broad themes which are often being repeated. You have to be prepared with your introduction and conclusions. For example, there are different ways of introducing the answer in sociology. You can start with defining the key concept. जो भी concept है, चाहे class struggle हो, mode of production हो, alienation हो, stratification हो, mobility हो, कुछ भी. You start with the definition. And definition has to be theoretical definition. That's one way of introducing the answer. The second thing could be the premise. Premise as in background based on which that theory or that question has been asked by UPSC. Or you can do the significance of the thinker. अगर thinker पे question है तो वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर को शुरू करने का. That you pose the significance, that how through this theory, for example, Weber's theory of stratification, despite its shares of criticism, was a bold and illuminating contribution to the discipline of sociology. Did you get the point? So this is how you can pose the significance of the thinker and you can start. Or if it is some, let us say, कोई current based इंसिडेंट है जिसका एप्लीकेशन है, जैसे मी टू पे आ गया, चाइल्ड लेबर पे आ गया, माइग्रेशन पे आ गया, यू कैन कोट द स्टेटिस्टिक्स और रिपोर्ट इवन टू स्टार्ट योर आंसर. एब्सोल्युटली नो इश्यू. इज इट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है. क्या हम पहले से तैयार करेंगे? हाँ. अगर वर्स्टीहीन पे क्वेश्चन आया, सो आई विल प्रिपेयर द डेफिनेशन ऑफ वर्स्टीहीन. That can be one way of introducing. I can prepare the premise that how Max Weber broadened the scope of sociology as the study of social action. Weber argues that objective understanding of motives can be achieved through Verstehen. Or I can start with the importance of thinker, that Max Weber's conception of Verstehen is a very important contribution to the methodology of contemporary sociology. Did you get the point? और 2 मिनट लगते हैं. जब आप वेबर पढ़ रहे हो, जब आप मार्क्स पढ़ रहे हो, आप 2-3 इंट्रोडक्शन हमेशा
तैयार कर लो, एटलीस्ट स्टैंडर्ड टॉपिक्स के तो तैयार कर लो, because otherwise we can't predict. So at least prepare for the standard topics. Once we are done, same example hai, once we are done with it, body we have already discussed, theory application hai to kaise karna hai, sub parts hai to kaise karna hai, but every question has to be properly answered, every sub part, every dimension has to be properly addressed, and whenever you are addressing the dimension along with argument, don't forget to give the substantiation. अब सब्सटैंसिएशन के लिए चाहे थिंकर पर्सपेक्टिव हो, केस स्टडी हो, एग्जाम्पल्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, रिपोर्ट्स हो, दैट्स योर कॉल. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? Before we shift to the enhancing the visibility of the content, one last thing, conclusion. Conclusion has to be prepared beforehand. और उसका स्टैंडर्ड तरीका होता है, कंक्लूजन में अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दो, बट उससे कभी अपना आंसर कंक्लूड मत करो. डिस्पाइट द शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, मार्क्स वर्क हैज मेड अ ह्यूरिस्टिक इंपैक्ट इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. Did you get my point, what I'm trying to say? Despite share of criticism, Durkheim's conception of social fact has or was an endeavor to create a separate niche for sociology among other disciplines. Or it was an endeavor to associate scientific status with sociology. आप पहले से ये लाइनें 4-5 तैयार करके जाओ, हर एक थिंकर के लिए एक लाइन, कि अगर उस थिंकर पे सवाल आया तो यही लाइन चिपका देंगे कि डिस्पाइट द शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ह्यूरिस्टिक कंट्रीब्यूशन और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन और अ सेपरेट नीश और साइंटिफिक स्टेटस फॉर सोशियोलॉजी. आप एक एक लाइन तैयार करके चले जाओ. इज दैट वेरी क्लियर? इट विल सेव योर टाइम एंड स्पेस. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? हाँ जी. दिस इंट्रोडक्शन बॉडी एंड सी, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता कि 10 नंबर में से 1 नंबर इंट्रोडक्शन का या आधा नंबर कंक्लूजन का. As a person who has been correcting the scripts, as in for the aspirants and seeing what kind of aspirants are faring well in the examination, I can tell you that if your content is good, if your answer is right, I will give you 4. But if there is proper structure, a nice way of introducing, meaningful introduction, meaningful conclusion, when that 4 will turn into 5.5, I don't know. Did you get my point? That 1 or 1.5 marks extra that you can fetch in every question is based on whether you have introduced, whether you have concluded, whether you have made use of all these things. Let's very quickly go through it. When we do the answer writing, first and foremost, handwriting का कुछ कर नहीं सकते, but make sure it is legible. बहुत बार क्या होता है यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, चाहे और बहुत अच्छा आंसर है, बट बहुत मेहनत लग रही है उनके आंसर्स को पढ़ने में, क्योंकि लेजिबिलिटी नहीं है, मार्क्स नहीं मिलते यार, बिकॉज आपका जो भी इंटेंशन है इट इज नॉट गेटिंग कन्वेड टू मी. दैट्स वन प्रॉब्लम. सेकेंड इज प्लीज हाईलाइट द की टर्म्स. व्हाई अननेसेसरी बॉदर द एग्जामिनर टू रीड द एंटायर आंसर? Always highlight the important terms on every page, but highlighting does not mean you end up highlighting everything. Maximum 4 to 5 highlights on a single side. That's it. एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं या बुलेट पॉइंट्स में? जिसमें आप अपने कंटेंट को अच्छे से लिख सको उसमें मार्क्स मिलते हैं. If you ask my opinion, it has to be blend of both bullet points and paragraph writing. Write your introductions and your conclusions in paragraph format, then give 2-3 subheadings depending upon the nature of the question, and within the subheadings the different bullet points can be written. Totally depends upon what is your style of writing. If you are comfortable with paragraph, go with it. I just believe bullet points, subheadings, flow charts, diagrams make your answer visible, make your content more discreet. तो एग्जामिनर एग्जैक्टली कैन पिन पॉइंट व्हाट यू हैव रिटन. वो चीज पैराग्राफ राइटिंग में खो जाती है. तो सिर्फ एक एडवाइस है कि कोशिश ये कर सकते हैं कि 20 मार्कर्स में पैराग्राफ लिख लो अगर मन है, 10 मार्कर्स में मोर और लेस बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी कंटेंट ज्यादा होता है एंड टाइम एंड स्पेस इज वेरी लेस. तो एटलीस्ट इन 10 मार्कर्स वी कैन मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और बुलेट पॉइंट्स. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? अगेन टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, ये बहुत बार काम आता है. मैंने अभी एक आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाला एग्जाम्पल दिया था, देन आई शो यू दैट आई एंड मी वाला एग्जाम्पल, then I told you that stratification wale structures, can all of that be written in tabular form? Yes, it can be.
try to make, you have to write 19 answers. Why write monotonous answers? Try to make every answer slightly different from each other in presentation. उसका एक reason होता है यार, examiner को पता चलता है आप मेहनत करके आए हो. You have not taken this examination casually. They know you have put in the effort in answer writing, and that will be reflected in your marks. I can vouch for that. Is this very clear for everyone? Okay. These are the important keywords which we have already discussed and you have to keep in mind. Most important aspect before I move to the topper scripts, these are some of the books which often students ask that what is supposed to be read. And I think most of the students end up reading this. Okay? And there are toppers also who have managed to clear by reading a single book. But if you ask me, can I prescribe that? No. Because if it has happened with someone, I'll give you one example from my personal experience without naming the student. It was some 4 years back, if I'm not wrong, 2016, I think, more than that, 2017 to be very precise, yes. There was a student, prelims ka result aaya tha, and the student was not expecting to qualify prelims that year. But that person managed to clear prelims. And then she came to me and she just said one thing, ma'am, मैंने सुना sociology सबसे छोटा optional है, जो इस time period में तैयार हो जाएगा. क्या आप तैयार करवा देंगी? मैंने कहा अच्छा बैकग्राउंड होगा शायद सोशियोलॉजी में. बोला नहीं, इंजीनियर है. तो मैंने कहा कुछ पढ़ रखा होगा एक बार. कहते नहीं, अभी डिसाइड किया है सोशियोलॉजी लेना है, क्योंकि अब सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए और इसी में करना है. तो आई सजेस्टेड कि बस एक काम हो सकता है, मेरे पास 4-5 साल के मेरे आंसर फॉर्मेट्स हैं, तुम वो पढ़ लो. कि मतलब और क्या कर सकती हूँ मैं, अगले 2 महीने में तुमको क्या सजेस्ट करूँ. मैं यही तो कहूँगी कि मैंने पिछले 4-5 साल से आंसर फॉर्मेट्स बनाए, क्योंकि हम लगातार विजन में टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आप वो जाके पढ़ लो. उसने वो पढ़ा, उसने एग्जाम दिया, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आईपीएस ऑफिसर. बट इफ यू आस्क मी, विल आई सजेस्ट कि मैंने 2013 से आंसर फॉर्मेट्स बना रखे हैं, आप 10 साल के आंसर फॉर्मेट्स उठा लीजिए, आपकी सोशियोलॉजी तैयार हो जाएगी. हो भी सकती हो शायद, क्योंकि हर साल हम इतनी बड़ी 10-12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो हो सकता है पिछले 10 सालों में शायद प्रिपेयर हो भी जाए. बट इफ यू आस्क मी, विल आई प्रिस्क्राइब दैट? नो. इट्स एन ऑप्शनल पेपर वर्थ 500 marks. So if you have done your coaching good enough, that's your standard basic note. Do all the value addition on it as per what we have discussed in the class. And if you are preparing on your own, then also prepare the basic notes and then do the value addition. And if you ask me कि कोई एक मैं आपको 600-700 पन्नों की किताब बता दूं और उसको पढ़कर सोशियोलॉजी हो जाए, तो होता होगा लोगों का. I will not prescribe that. Because that is not something which I am confident about. That is the problem. जहां मैं confident होंगी वहां मैं बोल दूंगी, but जहां मैं confident नहीं हूं वहां मैं नहीं बोलूंगी कि एक किताब को पढ़ने से हो जाएगा. But yes, you can make reference to the book, because many a times when you don't get the content anywhere else, you need more thinker's perspective, you need some more examples, you need some diagrams, you can refer to these books. Otherwise, go for standard books. This is for GS Sociology paper 1 and this is for Sociology paper. Is this very clear for everyone? Is it making sense? Let's very quickly. I'll just take 10 more minutes of yours. I have to discuss topper script. Is it visible for everyone? Read the question. Merton's dichotomy of manifest and latent function helps us to go beyond common sense perception of the world. Discuss. Simple question है. Now hold. ये same question तो UPSC पूछेगा नहीं. कोई और क्वेश्चन आया लेटेंट और मैनिफेस्ट में, क्या ये कंक्लूजन हो सकता है? कहने का मतलब है चाहे जीएस हो चाहे सोशियोलॉजी हो, मैं फिर से आपको एक चीट कोड दे रही हूं, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाइए, वो लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, उनकी एक कॉपी बना लीजिए, बिकॉज दैट बिकम्स द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन मोस्ट ऑफ योर आंसर्स. इज दिस मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? द इजीएस्ट वे टू डू दैट. नाउ रीड द क्वेश्चन. Merton introduced his dichotomous latent and manifest function as a response to his critique of structural functionalism with a motive to provide holistic picture of social action. Is the premise clear? The person has introduced the answer based on
premise that why this latent and manifest conception has come in first place. Now, the main demand of the question, it helps us to go beyond the common sense perception. The headings that the person has taken is cultural relativism, or it reveals institutional facets, or, and the person jahan important tha, wahan thinker's perspective has been added. So the person has given the argument along with scholarly perspective, along with making use of the subheadings. Is this very clear? See? I just wanted to show you an overall structure. Correcting the legal anomalies or illuminating subaltern perspective. And finally, hence Merton's theory helps in addressing limitation of functionalism and going beyond commonsensical notion. However, its limitation lies in the subjectivity of the perception in determining the dysfunctions of the social act. Is the conclusion there? Is the introduction there? Is the body consisting of broad subheadings? And for every subheading there is an argument and an example. This content will never be written by you. नहीं, ऐसा नहीं कि वो टॉप ना, वो मतलब नहीं, क्योंकि कंटेंट सबका अलग होगा. इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट का जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन हर आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होगा. कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड होगा. आप लिमिटेशन एक लाइन में लिख सकते हो क्योंकि वो उसकी मेन डिमांड नहीं है. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है. Let me give you a more clarity with respect to, let me see if I have a noting. Just a sec. Is it visible? आप रियलाइज करोगे कि जो आंसर फॉर्मेट्स होते हैं वो आपके नोट्स भी होते हैं एक तरह से. ठीक है, आप आंसर फॉर्मेट से नोट्स बना सकते हो. मैं ये नहीं कह रही इतना डिटेल्ड आंसर लिखना. द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ मोबिलिटी. इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता. ठीक है, वी स्टार्ट विथ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी. नाउ there are broad dimensions based on which the types can be discussed. For example, depending upon the direction of change, the mobility can be either horizontal or vertical. I wrote the definition of horizontal mobility from a thinker's perspective, and post which I gave the example. So, argument and substantiation. Did you get the point? Then again, I quoted what is vertical social mobility. I gave the example. But अभी मैंने सिर्फ एक subheading discuss करी है, based on direction of change. Another aspect is, depending upon the forms of change of social position experienced by the individual, social mobility can be contest or sponsored. Then what do you mean by contest mobility? Definition and example. What do you mean by sponsored mobility? Definition and example. Similarly, based on the manner in which you are studying the phenomena of social mobility, it can be intergenerational or intragenerational. Then what is intergenerational? Example. What is intragenerational? Example. फिर चौथा, based on range of social mobility, it can be absolute or it can be relative. And what is absolute mobility? Example. What is relative mobility and example. You don't have to write everything. But did you understand, was there an introduction based on definition? In the body, the broad dimensions were there. चाहे वो mode of change हो, चाहे वो position of change हो, ठीक है? So based on all those criterias, there are 4 broad criterias in which types of mobility can be divided. With respect to each type, you are giving one line definition, one example. One line definition, one example. Argument and substantiation. And finally, you are concluding your question. Is it making sense for everyone? Is it clear for everyone? ठीक है. एक और चीज बस मैं यहां पे ये बताना चाहती थी कि सपोज करो ये मेरा क्वेश्चन है. Discuss the implication of social mobility at individual and societal level in different structures.
फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, बट एक बार एक सिर्फ देख लो, मोबिलिटी पढ़ा है सबने? नहीं भी पढ़ा है तो सिंपल क्वेश्चन है, जब पढ़ोगे तो हो जाएगा। मोबिलिटी का इंपैक्ट एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल। मैं ये क्यों बता रही हूं, जब मुझे आंसर लिखना था और मुझे सोसाइटल लेवल पे डिस्कस करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पर्सपेक्टिव को कैसे डालूं, तो मैंने कुछ ब्रॉड हेडिंग्स बनाई। इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, इम्पैक्ट ऑन द क्लास, सॉलिडारिटी, इम्पैक्ट ऑन द सोशल ऑर्डर। क्या मैंने इस आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाया? अब सपोज करो जीएस पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आ जाए, कैन वी मेक इट सोशियोलॉजिकल बाय डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, discussing the impact on class, solidarity, discussing the impact on the social order in the society. The moment you write structure, order, solidarity, it is hands down sociological. Did you get my point? Is it making sense for everyone? Is it clear for everyone? ठीक है, एक नोट बनाया था मैंने, वो बस मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन योगेंद्र सिंह नहीं था, क्वेश्चन था डिजिटाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ये पॉसिबल टॉपिक हो सकता है, डिजिटाइजेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। इसको मुझे सोशियोलॉजिकली लिखना था। तो क्या योगेंद्र सिंह की एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है टू सोशल चेंज थ्योरी, जिसमें वो बात करते हैं ना मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल एंड कल्चरल लेवल। मैंने ये टेबल बनाई और जो अदरवाइज मेरा जीएस का आंसर था उसको मैंने इस बॉक्स में डाल दिया। अब ये सोशियोलॉजिकल हो गया। पढ़ लो। अब जीएस में वही लिखते जो मैंने लिखा हुआ है, वॉल्मेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, मैकडोनलाइजेशन ऑफ फूड हैबिट्स, अगर इंडियन सोसाइटी की क्लास याद होगी तो, सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। बट क्योंकि मैंने मैक्रो में उसे कल्चरल लिखा और मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ योगेंद्र सिंह, नाउ दिस बिकम्स अ सोशियोलॉजिकल आंसर। और मैंने ये नहीं कहा कि योगेंद्र सिंह ने कहा है, मैंने क्या लिखा है, यूजिंग इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ योगेंद्र सिंह। आई एम अप्लाइंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगेंद्र सिंह थ्योरी इन राइटिंग द आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, सो हियर कम्स द सिग्निफिकेंस। अब देखो, जब इंसान इतना बोलता है तो फिर बस दिस इज वन लास्ट पार्ट विच आई कांट डू, बट एनीवे, सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ऑन अ सीरियस नोट, whether wherever you do it, but please join some test series, and if you don't have time, और कभी कभी होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अभी कुछ पढ़ा नहीं है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या करेंगे, वो भी पॉइंट अपनी जगह है, लेकिन डेली आंसर राइटिंग इज मैंडेटरी। Is that clear? And I'll tell you a very honest opinion, jokes apart. First thing is, when you practice daily answer writing, let us suppose from today onwards you promise yourself that whatever sociology I've studied, from tomorrow I will start revising and I will write 2 answers of sociology. You develop the knack of qualitative answer. But there is no guarantee that you will be able to replicate the same answer in the exam, because maybe you're not able to finish the paper. You are not able to time manage. You don't know how to write those 19 answers in the stipulated time. And as a result, you end up missing out on 1 or 2 questions. So daily answer writing improves the quality of the answer. But when you write your mocks, it helps you to manage both the quantity and the quality. Is that clear? When you write your mocks, you understand that पहले 20 markers attempt होते हैं और बाद में 10 markers. ये बहुत बेसिक सा रूल होता है, लोग नहीं फॉलो करते, पहले हमेशा 20 मार्कर अटेम्प्ट करना चाहिए। साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन होता है कि 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो गया, प्लस 20 मार्कर्स वो होते हैं जो आपने खुद के लिए चूज करे हैं, और बाद में हमें 10 मार्कर्स करना चाहिए। इज दैट क्लियर? बिकॉज दे आर कंपल्सरी क्वेश्चन, वो एनीवे यू हैव टू अटेम्प्ट, यू डोंट हैव टू थिंक वेदर टू अटेम्प्ट और नॉट. It has been given to you, it is a compulsory question, you have to write the answer. Is that very clear? These little nitty-gritties you learn from the mock test. बहुत बार क्या होता है कि पेपर्स रिपीट हो जाते हैं,
बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि सोशियोलॉजी में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, 70-80% पेपर वैसे ही रिपीट होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले साल जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे रिपीट हो गए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए रिपीट हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाता है कि अगर ये करंट में चल रहा है तो यही क्वेश्चन बनेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कुछ हैं वही पूछे जाएंगे। आंसर राइटिंग जो टेस्ट सीरीज में की जाती है, दैट इज लार्जली फॉर 2 रीजंस, 1 टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एंड सेकंड टू मेंटेन डिसिप्लिन। वो क्या होता है ना, जब तक टेस्ट लिखने का प्रेशर नहीं होता है ना, वो पढ़ाई उस लेवल की होती नहीं है। आप रोज कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको पता है कि आपको अगले संडे जाके टेस्ट देना है, तो फिर आप रटोगे, आप लिख लिख के पढ़ोगे, आप पहली बार डेफिनेशन याद करोगे, आप बोल बोल के पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि संडे को टेस्ट देने जाना है। अदरवाइज आप कैसे पढ़ रहे हो? That's the difference. Is that very clear? So on this note, I conclude today's session. I hope whatever you have come up with, has that been resolved? Whatever you were looking for, I hope to some extent I am able to solve your queries. ठीक है? Otherwise, if still you have doubt, smriti.s@visionis.in. As far as the notes are concerned, the PPT would be there in the description box, as well as the notes which I showed, that's available on Sociology by Smriti Shah Telegram channel. So you can refer there. Is that clear for everyone? So let's conclude the discussion and session. Bye people. It was nice having all of you. Chalo, all the best people.